ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और द लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट, वी लर्न द थिंग कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कन्वर्जेंस एंड टेक्नोलॉजीज। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज द कंप्यूटर। ओके, so we all know that we are the familiar with this term. What is the meaning of the computer? And as we know that computer is an electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instructions called program. So the instructions which is given the computer, that is called the program, because the set of instruction known as a program. Okay, and the set of programs is known as a software. Okay, then after that, this points is that what are the latest terms in the hardware, software, data, and information. We all know that the physical components of the computer system that we can touch, that is known as a hardware. कंप्यूटर सिस्टम का वो फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप टच कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ हार्डवेयर. जैसे इज अ फिजिकल पार्ट, जैसे इज लाइक द माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर. सो ये आपको क्या है, दिस इज अ हार्डवेयर. एंड सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर इज टर्म, इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ये रेफर्स करता है प्रोग्राम्स को कि व्हाट टू डू, ये हमें क्या करना है. ठीक है, इट रेफर्स द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. एग्जैक्टली हमें करना क्या है, एग्जैक्ट. ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं डेटा का, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा. तो डेटा क्या होता है कि अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज अ डेटा. Okay, unprocessed raw facts and figures are called the data. But the meaningful information, meaningful data जो होता है, meaningful form of data is called the information. Meaning, because when the systems give the instruction, जब system में कोई data input, जैसे हमने suppose capital A input किया, तो system can check that के is it right that capital A है या नहीं, and after that it is written on a screen, so that is the information. Okay, and after that we discuss about the functioning of a computer, कि computer का क्या function है. So we all know that the computers work on the three things: input, process, and output. This is called IPO cycle is also called. ठीक है, input, process, and output. First we give the instruction to the computer system, that is called the input, and after that it check the information and all the details. This is called the processing, and after the processing the के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट. वो हमारा क्या होता है, आउटपुट. क्लियर. अब हम आफ्टर दैट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, दैट्स आईपीओ साइकिल इन द शॉर्ट. अब कंप्यूटर टेक्स एंड इनपुट्स कैरी आउट अ प्रोसेस अपॉन इट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट. फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. अब कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनल जो सिस्टम है, दैट फर्स्ट एक्सेस डेटा, दिस इज इनपुट. प्रोसेसिंग द डेटा, डेटा का प्रोसेस होना, दैट इज प्रोसेसिंग. एंड आफ्टर दैट जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है, दैट इज आउटपुट. एंड देखिए जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज आउटपुट. एंड द रिजल्ट वेयर द स्टोर, दिस इज द स्टोरेज. जो कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मैंने बोला आईपीओ, मैंने बोला था कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. तो इनपुट में क्या होता है कि फर्स्ट वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम, देन इट परफॉर्म देयर वर्क, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग देयर वर्क इट्स गिव द रिजल्ट्स. वो आपका रिजल्ट देता है. ये आपका था आईपीओ का पार्ट. इज इट क्लियर? बट इन द टर्म, अब जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर आपको सपोज दैट समवन हैव टू मेक द मैंगो शेक, किसी को मैंगो शेक बनाना है, और मैंगो शेक का हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि इन दैट मैंगो शेक एग्जांपल, कि आपने फर्स्ट, अब आपको इनपुट देना है मैंगो शेक बनाने से पहले का जो है इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट. तो फर्स्ट वी पील ऑफ द मैंगो, जो छिलके उसको हम निकालते हैं. ठीक है,
देन वी स्लाइस इट, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी कट इट, उसको कट करते हैं। एंड आफ्टर कटिंग ये देखिए प्रोसेस हो गया इनपुट, इट मीन्स दिस इज इनपुट, ये होगा कि आप उसके छिलके को निकालेंगे आप, देन वी कट इन सम स्लाइसेस ऑफ पार्ट्स में आप उसको कट करोगे। एंड आफ्टर कटिंग दिस पार्ट्स में कट करने के बाद आफ्टर दैट वी इंसर्ट इन अ जार, उसे क्या करते हैं लोग जार में इंसर्ट करते हैं, जार में उसको डालते हैं, जो मिक्सर ग्लास मिक्सर जो जार होते हैं, एंड उसमें कुछ और भी डेटा जो वैल्यू कुछ भी जो भी मिलाना होता है किसी को वट एवर शुगर, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रोसेसिंग, उसके बाद उसको हम ऑन कर देते हैं, देन वो क्या करता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दिस वो घूमना स्टार्ट, और जैसे वो घूमना स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग, वो क्या होता है आपका प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जैसे वो घूमना स्टार्ट कर दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग इज गिव द रिजल्ट, वो आपको क्या एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, दिस इज आवर आउटपुट। आप जब आप मैंगो को डालो आपने, मैंगो डालने के बाद आपने उसको जब स्टार्ट कर दिया मिक्सर, देन स्टार्ट द वो उसको छोटे छोटे और पार्ट्स में कट करता है, देन मिक्स द मैंगो, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, वी फॉर्म इट एक जार पात, और मुझे मैंगो शेक हमारा रेडी हो जाता है, और मैंगो शेक इज रेडी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, सेम एज अब यही चलता है, बट कंप्यूटर सिस्टम एक पार्ट, अब तो ये प्रोसेस बंद हो गया। अब वेयर वी कैप द डेटा, जो मैंगो शेक जो आपका बना उस मैंगो शेक को कहाँ रखोगे आप, उसको रखने के लिए कोई प्लेस चाहिए, तो दैट द प्लेस, जब आप किसी उसको कंटेनर में रखते हो, तो दैट द कंटेनर वो क्या करता है, आपका स्टोरेज डिवाइस इज वर्क लाइक द स्टोरेज डिवाइस, डेटा को उसी में रख, तो सेम एज द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इट्स accepts the data, it accepts the data, after that is a process the data, this is a processing, then third one is a produce result, this is the output, and fourth is the stores the result, this is the storage। अब जो रिजल्ट को जो ये क्या स्टोर कर रहा है दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, जब आपने इसको ऐसे कर लिया कि डेटा आपका स्टोर भी हो गया, आपने उस रिजल्ट को कहीं कहीं आपने कैप्ट भी कर लिया, आफ्टर दिस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर comprises of the unit to perform each of the above functions। The basic structure of a computer is shown figure 1.2 में आप देख सकते हो कि एक फिगर आपका है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, इन दैट कि एक इनपुट डिवाइस है, देन प्रोसेसर, देन मेन मेमोरी, देन external memory, then output units, and the CPU, and this is a part of the CPU because the CPU stands for the central processing unit, and CPU consists of three things: ALU, CU, and the MU. Okay, ALU, CU, and the MU. ALU stands for the arithmetic logic unit, CU stands for the control unit, and MU stands for the memory unit. This is the main memory. ये प्रोसेसर आपका हो गया, उसी का पार्ट है, आगे चलते हैं। एंड इसके बाद एक टर्म आपको मिलता है दैट इज द मेमोरी, कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या, इट्स वेरी इजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेमोरी, मेमोरी मीन्स व्हाट, मेमोरी is the storage brain of computer which holds the data during the processing। जैसे भी हमारे मेमोरी में कुछ डेटा कुछ कॉन्सेप्ट याद रहता है, ठीक है, हमारे भी मेमोरी में डेटा कुछ कॉन्सेप्ट याद रहते हैं ना, तो इस डेटा कॉन्सेप्ट को क्या, दिस इज द मेमोरी। So memory is the storage brain of computer which holds the data during processing। Clear? कि data during the processing ये आपका डेटा है। अब हम आगे चलते हैं कि मेमोरी आपका हो गया, एंड आफ्टर दिस इनपुट फंक्शन। अब इस मेमोरी में देखिए ऐसे होता है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को हो गया होगा। स्वराज, याशिका, मुस्कान, समीक्षा,
Raj Verma, Rimjim, Raj Verma, and the Adit Singh. Okay, and after this point, then input functions, then output function क्या होता है, and processing function. अब हम इसमें जो input, तो we know that कि what is the input, because we know that कि when the systems, या जब आप कोई value system के अंदर input करते हो या आप जो कोई instruction देते हो, that is called the input. Because input function is it is responsible for providing the information in the computer, and it is performed by the input unit. It means जो भी information आप system को provide करते हो किसके थ्रू जाता है, that is goes through the input function, that is the input unit. Then this is the output unit. It means output unit is responsible for displaying the data input to computer or process data in the human readable form, and is performed by output unit. Is it clear? कि ये क्या करता है कि it is responsible for displaying the data. आपने जो भी डेटा दे लिया तो उसको आउटपुट करने का जो काम होता है वो कौन डिस्प्ले करता है, दैट इज अ आउटपुट फंक्शन. क्लियर? सो वी ऑल नो दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरियस जो आउटपुट डिवाइसेस अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे. देन प्रोसेसिंग functions क्या होता है. In the processing functions we already discussed that, and I give the example to you. मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था इन द प्रोसेसिंग फंक्शंस का, बट यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं प्रोसेसिंग फंक्शन में. इन द प्रोसेसिंग फंक्शंस दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन गिवन डेटा. इट इज परफॉर्म्ड बाय CPU, Central Processing Unit. To carry out this function, CPU uses the following components. First, ALU, CU, and the primary. ALU stands for the arithmetic logic unit, and arithmetic logic unit, it is responsible for carrying out arithmetic instructions or logical instructions. It is responsible for carrying out the arithmetic instructions, example plus, minus, multiplications, and the division, or logical instructions may greater than, less than, equals to, get greater than, so that it is managed by the ALU, that is greater than, less than, okay, equal. And CU stands for the control unit. CU is stand for the control unit. And what is the work of the control unit? Is responsible for controlling the execution of instructions. It means then one instructions at a time, since it supervise and controls required the components to carry out the instruction. Jैसे is like the example of that. आप समझ सकते हो. In your family members, as the head of the family, is control all the things. वो क्या करते हैं, सबको manage करते हैं, control. So that is the control unit. And the primary memory, this memory is made available to CPU to store data and instructions being processed. Memory in detail shall be covered. अभी हम आगे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में, बट दिस इज द पार्ट. Then primary memory, this is the memory is made available to CPU to store data and instructions being processed. And the storage function, then अगर हम बात करते हैं storage functions की बात करते हैं, so what is the meaning of the storage function? It is responsible for storing any kind of information permanently and is performed by storage units, various storage devices like hard disk, CD, DVD, USB drives, etc. Compromise of this unit, the storage devices shall be covered. ये भी आगे के चैप्टर में कवर्ड होगा. So then, okay,